लग रहा है भाई यार, वाह 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 वाह। यस हेलो गाइस, व्हाट इज वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड, डूइंग ग्रेट। सो गाइस द थिंग इज़ दैट जस्ट एडिट करके हटा एंड उसमें मैंने देखा कि भाई मैंने इंट्रो तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है। सो सोचा थोड़ा इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ भाई, इंट्रो के बिना तो क्योंकि अच्छा नहीं रहता। सो उस दिन का सीन कुछ ऐसा था यार, मैं अराउंड 2:30 से 2:40 के बीच एयरपोर्ट में निकल गया था एंड मैं स्पेशल गया था भाई सिंगापुर एयरलाइंस के A350 के लिए। कॉज A350 सिंगापुर एयरलाइंस का नॉर्मली डेली नहीं आता है, A380 आता है एंड समर शेड्यूल में मैंने 777 देख रखा है। सो आई डोंट थिंक सो मैंने A350 दिल्ली में देखा, या पहले आया होगा तो मैंने नहीं देखा होगा। सो सिंगापुर का A350 आ रहा था। इसका सीन ये था भाई कि ये दिल्ली भी पता है 7 आई गेस 4 डेज़ बाद आ रहा था। ये समथिंग कुछ जब आया था उससे 4 दिन पहले भाई ये सिंगापुर से पेरिस गया था, उसके बाद पेरिस से ये इस्तांबुल गया था, उसके बाद इस्तांबुल से दिल्ली आ रहा था, फिर इसने दिल्ली से सिंगापुर जाना था। तो ये है थोड़ा भाई इस ब्लॉग का ओवरव्यू। सो मैं मेन गया था भाई सिंगापुर एयरलाइंस के लिए। बाकी अब आप आगे एंजॉय करो कैसा क्या सीन रहा भाई। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे भी हुई बट एंड में इट वाज ऑल वर्थ इट, जैसे कि मेरा हर ब्लॉग एंड में वर्थ इट हो ही जाता है। सो या वही सीन है, अभी एंजॉय करो भाई। पहला प्लेन अपना जो कि है भाई IT एयरवेज का A330, जो कि डिपार्चर के लिए रेडी है। आओ पहले उसे देखते हैं, लेट्स गो। सो इज दैट्स द वेरी ब्यूटीफुल 330-900 ऑफ IT एयरवेज नाउ रेडी टू गो बैक टू होम। So guys, here comes the beautiful 767 of SF Airlines from Azul. So भाई कुछ नहीं कर सकते जब किस्मत ख़राब हो यार। यहीं पे था, अचानक पता चला कि सिंगापुर वाला 28 पे जा रहा है। जैसे ही भाई भागा, इतने में पहुँचा हूँ। कैसा मिला भाई आप लोगों ने देखा, स्पेशल उसके लिए आया यार मैं अराउंड 3 o'clock। स्पेशल उसके लिए आया हूँ भाई 3-4 o'clock कि वो करता बच्चा अब लोगों की बनता, बट मेन तो मैं उसी के लिए आया था। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। बस अभी यार डिपार्चर टाइम भी उसका नहीं दिखा रहा है कितने बजे जाएगा, क्या सी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता भाई। 11 मई को ये सिंगापुर से पेरिस गया था, उसके बाद भाई आज निकला ये। पेरिस से पहले गया भाई इस्तांबुल, इस्तांबुल से फिर दिल्ली आया है भाई। तो दोनों क्या सीन है, इसका डिपार्चर टाइम भी नहीं लिखा, तो भाई पता नहीं वापस जाएगा या नहीं। बाकी रुका तो हूँ यार, ब्लॉग तो अच्छा बनानी है सिंगापुर के चक्कर में, लेकिन KLM का 787-10 और एयर इंडिया का 787-8 का डिपार्चर मिस हो गया। बट कोई नहीं यार, काफ़ी चीज़ें आनी है, करते हैं स्पॉट बढ़िया से। ब्लॉग तो अच्छा ही बनाऊंगा नो डाउट, बाकी अब किस्मत की बात होती है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले प्लेन के साथ आगे। सो गाइस, हियर कम्स द ब्यूटीफुल द कलरफुल 767 ऑफ उज़्बेकिस्तान एयरवेज फ्रॉम ताशकेंट। So guys, here comes the beautiful A330-300 of Turkish Airlines from Istanbul.
सो गाइस गुड न्यूज़, सिंगापुर A350 900 को कर दिया है स्केड्यूल्ड 6:31 का डिपार्चर है फ्रॉम दिल्ली टू सिंगापुर. नाउ आई एम जस्ट होपिंग दैट रनवे 29 से जाए 28 से ना जाए, सो दैट आई कैन स्पॉट इट. So guys, that's VTTSN, the 787-9 of Air India, which will now be going to London. ये भाई रनवे 29L का काम चलते हुए ज़ोरों शोरों से. So guys, here's the beautiful A330-300 of Finnair from Helsinki. So guys, that's VTANR, the 787-8 of Air India, which will now be going to Dubai. And that's a rolling takeoff. Here comes the beautiful 787-10 of Singapore Airlines from Singapore. ठीक आ रहा है अभी, 8 पे ख़राब हो जा रहा है अभी पूरी सुबह में. Here comes the A320 of Azerbaijan Airlines from Baku, and मेरे को नहीं लगता मैंने इससे पहले कभी डे लाइट में दिखाया है. Here comes the Boeing 757 of Blue Dart from Ahmedabad.
So guys, here comes the 777-300ER of Saudi Airlines from Riyadh. So guys, here comes the A330-300 of Aeroflot from Moscow, SVO. So guys, here comes the beautiful 787-8 of British Airways from LHR. Guys, that's the 330 of Turkish Airlines ready to go back to Istanbul, and that's the Uzbekistan Airways 767, which is ready to go back to Tashkent. ये आगे तो आ जा रहा है. होप नाउ इट टर्न्स फ्रॉम P8 P6 या P7 से ना है भाई, P8 से ही आए. लेट्स सी.
Pakistan 767, ready to go back to Tashkent. Guys, here comes the beautiful A330-300 of Swiss Air from Zurich. So guys, another good news, the A350-900 of Singapore Airlines is coming for takeoff at runway 29 only. Now let's hope it comes from P8 turning, not P5, 6, 7. From P8 it should come. Just hoping. So guys, there it is, the A350-900 of Singapore Airlines, जो मिस हो गया था रात में. मिस क्या मतलब, भूल गया, बट कैसा शॉट लिया वो आपको पता है. बट इट इज़ हेयर नाउ इन डे लाइट. सो गाइस, टर्न हो गया. P8 से तो नहीं हुआ, बट यहाँ P6 से हुआ है. गेस P6 से हुआ, बट 8 से नहीं हुआ. कोई नहीं, कोई इतनी दिक्कत नहीं है भाई. इतना प्यारा शॉट स्टिल मिल रहा है ना भाई, और क्या चाहिए. There it goes, now taxiing to a line on the Myanmar. ये A350 अलग ही चीज़ है भाई यार. क्या लग रहा है भाई यार. ईश्वर, बवाल चीज़ है वे, सारा सिस्टम मिल जाता है. कंट्रोलिंग टेक ऑफ.
इसका पूरा टेक ऑफ दिखाऊंगा और कितना प्यारा होने वाला है। मैक्स 9x करूँगा ताकि ज़्यादा फटे ना भाई क्वालिटी। प्यारा सा टेक ऑफ दिखेगा। अरे भाई वाह 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 वाह। वाह जी वाह। Guys, that's the Boeing 757 of Blue Dart, which will now be going to Chennai, PTBDA. So guys, here comes the giant, the massive, the queen of skies, the 7478 of UPS from Shenzhen. Here comes another beautiful A350-900, this time of Qatar Airways from Doha. So yeah guys, this was it from this vlog. I hope you guys liked this one and मज़ा आया होगा भाई इस vlog में.
सिंगापुर A350 के लिए स्पेशल आया था भाई। स्टार्टिंग में लैंडिंग मिस हो गई, बट टेक ऑफ इतना प्यारा मिला तो भाई ऑल इन ऑल वर्थ इट हो गया भाई मेरा आना स्पेशल सिंगापुर A350 900 के लिए। बिकॉज मैंने देखा नहीं था आज तक यहाँ पे, आई गेस, एंड डे लाइट में तो खास कर नहीं देखा था। सो या इट वॉज वर्थ इट एंड मज़ा आया तो भाई डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाकी भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।